Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is Mrs. Hafsa Ghaffar, Senior Teacher, Park Studies, Divisional Public School, Chicha Wadvi. How are you all? Hope you are quite well, physically and mentally. Dear students, now let's start our today's topic. Today I am going to start the next chapter, which is about atmosphere. Okay, let's start today's topic. Atmosphere. Dear students, atmosphere के लिए उर्दू में जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है खुर्रा हवाई. एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर हमारी जमीन सराउंड है ऑल साइड से एक गलाफ की तरह. और अर्थ atmosphere is surrounding our earth from all sides in the form of a cover due to gravitational force of earth. Atmosphere is attached to earth from all sides. The life on our planet Earth is due to this atmosphere. Atmosphere is composed of three basic elements. अब ये basic elements कौन से हैं मैं आपको बताती हूँ. सबसे पहले इंट्रोडक्शन. उसके बाद हमने अब ये बेसिक एलिमेंट्स लिखने हैं. ये कौन कौन से हैं? नंबर 1 है रेगुलर गैसेस. गैसेस. Number 2, variable gases. Three है pollutants. ओके जी, ये तो हो गए एटमॉस्फेयर के बेसिक एलिमेंट्स. इसके बाद these are mostly found in the lowest part of atmosphere. Next topic हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन और इम्पोर्टेंस ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ ऑक्सीजन. अब ऑक्सीजन की क्या इम्पोर्टेंस है, इसी तरह फिर हम नाइट्रोजन की भी इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे वन बाय वन. तो ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर लाइफ, यानी हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. When we breathe, we absorb oxygen in our body. This gas interacts chemically with other elements immediately. It is absorbed in our blood. It gives us energy by burning our food. The survival of life
is impossible without this gas. Oxygen helps in burning all kinds of energy resources, coal, oil, natural gas, etc. ये स्टूडेंट्स ये तो थी ऑक्सीजन की इम्पोर्टेंस। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की इम्पोर्टेंस जो है the fertility of soil depends on nitrogen. This gas is necessary for the growth of plants. It also helps in controlling fire. तीसरा पॉइंट है वेरिएबल गैसेस। वेरिएबल गैसेस बेसिक एलिमेंट्स का दूसरा पॉइंट है, वैसे तीसरा टॉपिक है वेरिएबल गैसेस। वेरिएबल गैसेस जो हैं, नो वन कैन डिनाई द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएबल गैसेस इन एटमॉस्फेयर। वेरिएबल गैसेस include carbon dioxide, water vapor and ozone. Carbon dioxide is heavier than other gases. The quantity of carbon dioxide has increased about 25% in the last 200 years. The burning of energy sources, coal, oil, natural gas, produce smoke, which increase the quantity of carbon dioxide in atmosphere. Similarly, the atmospheric temperature is also rising, which is harmful for the survival of life. It affects global climate. The other variable gases is ozone, O3. In atmosphere, ozone is found about 17 to 50 kilometer above the Earth's surface.